Welcome to EduRev. Harappa was a very, very busy place. There were a lot of people and they were involved in many other things. कुछ रूलर्स थे, कुछ फार्मर्स थे, कुछ आर्टिस्ट थे जो कि अपना अपना काम करते थे. रूलर्स कई माना जाता है कि they sent people to other places to bring raw material, to bring metal, precious stone. Means they had trade also. ये नहीं कि अपने में ही रह रहे. They used to trade with people in the other civilization as well. In fact, लोगों को लिखना भी आता था. So you can see many pictures, many symbols being made on the seals, on the walls. However, the problem is we have not been able to decipher the script of the Harappans. अभी तक हम लोग ये नहीं समझ पाए उन्होंने क्या लिखा था, because उनकी स्क्रिप्ट है हम उसको अभी नहीं समझ पाए हैं. We have not been able to interpret it or decipher it. But it is known that the script was pictographic in nature. मतलब pictures भी हैं उसमें, symbols भी हैं, and it was written from left to right in a boustrophodon manner. मतलब इस तरह से लिखा जाता था हड़प्पा की स्क्रिप्ट को, which you will read later on in class 7th and 8th. But हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि वो लिखना क्या चाह रहे थे. But it is amazing that they knew how to write. Seals पे कई बार कई सारे symbols बने हुए हैं और materials पे भी होंगे, but the other materials have not survived. Another interesting feature is कई सारे terracotta toys. Terracotta मतलब जो मिट्टी के basically बने होते हैं. Terracotta toys have been found. मतलब बच्चे खेलते भी होंगे उनके साथ, अभी भी वो प्रिजर्व्ड हैं, वो मिले हैं. मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर्कियोलॉजिस्ट सेड आर मेड ऑफ स्टोन, शेल, मेटल, कॉपर. इन सब का बना था. मतलब इवन हड़प्पास हैड नॉलेज अबाउट कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर. इन सब के बारे में हड़प्पन्स हैड नॉलेज. कॉपर और सिल्वर वर मेनली यूज फॉर टूल्स एंड वेपन्स, जबकि गोल्ड और सिल्वर को ऑर्नामेंट्स और वेसल्स के लिए यूज किया जाता था. इनफैक्ट ornaments were not just for women, केवल women के लिए नहीं थे. Ornaments were worn by males also. Most striking thing were the beads. जो beads होती थी, मतलब जो basically माला टाइप की बनाते थे, and a lot of them have been found. Weights and blades have been found. कई सारी seals भी मिली थी. अब जो seals थी usually square होती थी 2x2 inch की, and seals were used for many purposes. कई बार वो as a coin काम करती थी trading के लिए. They were also used as toys. They were also used as amulets. Amulets मतलब क्या होता है? मतलब तावीज. How do we know that? Seals में ऐसा छोटा सा छेद होता है. Most of the seals that are found, they had a hole. जहाँ से आप यहाँ पे basically string रस्सी डाल सकते हो ताकि आप बांध सको उसको. So they were used as amulets also. Amulets maybe for ornament and maybe because they thought कि amulets पहनने से, seals पहनने से बुरी आत्मा नहीं आएगी. So to ward off the evil. These are examples of terracotta toys. Again, this is why these videos are important for you. You get to see real photos which are not really available in your books, so that you get a better understanding. ये terracotta toys इस type के मिले थे, as you can see. Now, usually जो हमारी seals होती थी, as I said, were rectangular and they had animals carved on them. Seals पे usually animal कोई ना कोई carved होते थे. They also made pots with very, very beautiful black designs. अब मेहरगढ़ के बारे में मैं एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी शुरुआत में, which I would like to repeat. मेहरगढ़ was also important because cotton was grown in मेहरगढ़. मेहरगढ़ में cotton के evidences भी मिले हैं. Real pieces of cotton have been found attached to a silver vase. So silver एक basically vase, गमला बड़ा टाइप में कह सकते हो, उससे जुड़े हुए cotton के pieces मिले हैं. कॉपर ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो. मोहनजोदारो में कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, विच गोज टू शो कि कॉपर का भी काफी ज्यादा यूज था. नाउ एज ए सेट, सारे रॉ मटेरियल्स तो हड़प्पन्स के पास थे नहीं खुद के. सो हड़प्पन यूज्ड टू इंपोर्ट मेनी रॉ मटेरियल लाइक कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर. कई भी सारे प्रेशियस स्टोन्स मिले हैं. एंड बिकॉज हड़प्पा जिस एरिया में है वहां तो ये सब होता नहीं है, अभी भी नहीं है, ना कोई एविडेंस मिला है. तो मतलब मेनी ऑफ दिस वॉज इम्पोर्टेड. अब इम्पोर्ट कहाँ से कराएंगे? Most probably they imported cotton from Rajasthan. राजस्थान में है. Even from Oman in West Asia, मतलब इंडिया के बाहर भी इतना दूर से भी they had trading. Tin, which was mixed with copper to produce bronze, जो use होता था, it was brought from Afghanistan and Iran. Gold could have come from present-day Karnataka, which has some gold mines, and precious stones from Gujarat, Iran, and Afghanistan. Just goes to show Harappans had excellent trading relations outside their region as well, which can be seen in the form of seals, in the form of raw material that they had. These are some examples of the beads. जो मैंने कहा beads थी बड़ी सारी अच्छी तरीके की. They were used for various purposes. इस टाइप की beads को use होते थे for their ornaments and for other purposes. Now,
because the population was increasing, people had settled down, so obviously खाना भी चाहिए था, तो खाने कहाँ से आते थे? Most of the people lived in the cities. जो कुछ लोग सिटी में नहीं रहते थे वो लोग क्रॉप्स उगाते थे एंड दे रेयर एनिमल्स. क्रॉप्स मतलब सिटी के बाहर से ज्यादातर आते थे. Remains of the plants from Harappan have been seen: wheat, barley, pulses, rice, seesme, linseed, mustard. इतनी सारी वैरायटी थी and all of that was consumed by the Harappans. इसके अलावा new tool was formed called the plug, means फावड़ा. Now plug और फावड़ा was introduced which made it very easy to dig the earth. Ground को खोदना काफी आसान हो गया, which made it easy to plant the seeds also. जो रियल प्लग थे दैट वर मेड ऑफ वुड, तो अभी तो वो बचे नहीं है, बट मेनी टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड. कई सारे छोटे छोटे खिलौने टाइप के मिले हैं प्लग के, विच गेव अस एन अंडरस्टैंडिंग कि हरप्पन्स के टाइम पे ये भी हुआ करता था. हरप्पन्स रेयर्ड कैटल, शीप, कई सारे उसमें पैस्चर्स थे अराउंड देयर ओन सेटलमेंट्स. दे आल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, फिश हंटिंग करते थे, दे यूज्ड टू हंट एनिमल्स एज वेल. एक और बहुत इंटरेस्टिंग सिटी थी हरप्पन सिविलाइजेशन में, विच वॉज अ ढोलावीरा सिटी, विच इज इन टुडेज गुजरात. इट वॉज लोकेटेड इन खादिर बेट इन द रण ऑफ कच्छ. जो हमारे पहले मैप थे हरप्पन सिटीज के, आपने वीडियोस में देखा होगा, उसमें ढोलावीरा की भी मार्किंग है, वेयर ढोलावीरा इज एग्जैक्टली. देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग thing about Dholavira. Dholavira was a city which was divided into three parts. As I said earlier, mainly Harappa cities were divided into two parts. आमतौर पर हरप्पा सिटी दो पार्ट में होती थी, Citadel and the common town. But Dholavira was divided into three parts. Each part was surrounded by massive stone walls and entrance through gateways. So हर पार्ट में basically दीवार थी, border, and then there was a gateway through which it could enter. So remember, Dholavira was a city divided into three parts. Also, there was a large open area where public ceremonies could be held. As I said, हरप्पा की जो स्क्रिप्ट है वो मिली हमें कई जगह लिखी हुई है, वुड में मिली है, स्टोन में, बट यूजुअली हम नहीं बता पाए हैं वो क्या था. इसके अलावा ढोलावीरा में वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैज बीन फाउंड. हरप्पन स्क्रिप्ट वुड में मिली है हमें. यूजुअली बाकी जगह पे हरप्पा जो भी लिखते थे स्टोन्स में मिला है, हम लोग को और चीजों में मिला है, बट ढोलावीरा में वुड में मिला है लिखा हुआ, विच इज वेरी वेरी यूनिक. एक और बहुत इंटरेस्टिंग सिटी है वो है लोथल, which is again in today's Gujarat. It was near the tributary of Sabarmati. It was situated near areas where raw materials such as precious stones were found. Now, Lothal was famous as a port. ज़्यादातर जितना भी हम हरप्पन्स के टाइम पे ट्रेडिंग होता था, that was through Lothal only. So Lothal again is an important port city of the Harappans. There was also storehouse in the city because a port city है तो infrastructure तो ऐसा हो गई. A lot of things were sent out, lot of things were imported from Lothal. Many seals and ceilings were found in the storehouse at Lothal. Building भी मिली थी which had a workshop for making beads. So कई सारे beads making भी दिखी है Lothal में. So a lot of other evidences have been found. This again is a map which shows you location of Dholavira and Lothal. As I said, in today's Gujarat, as you can see, very very important places both of them. Rakhigadi, which was recently found, it is in today's Haryana, one of the largest Indus Valley civilization sites. Now, how did the Indus Valley civilization end is still a big mystery. There are various points of view given. Some people say that about 3900 years ago, people stopped living in villages, they migrated. Different kind of evidences have been found. मोहनजोदारो में देखा है कि सब कुछ खराब हो गया था. A lot of garbage is seen on the streets. का ड्रेनेज सिस्टम टूट गया था, तो मे बी फ्लड्स आए थे या फिर देयर वाज एन आउटसाइड इन्वेजन. सम स्कॉलर्स से नहीं यार रिवर सूख गई थी तो पीपल हैड टू गो अहेड, पीपल हैड टू मूव आउट. सम से डिफॉरेस्टेशन हो गया था, बट देयर इज स्टिल नो क्लैरिटी. देयर इज अनदर व्यू कि आर्यंस का अटैक हुआ था, पीपल केम फ्रॉम आउटसाइड, दे अटैक. दिस इज द थ्योरी व्हिच इज मोस्ट वाइडली accepted, but अभी भी that is not the full and final theory. Apart from the grazing by large herds of cattle, maybe उससे green cover destroy हो गया था, इतने सारे animals हो गए थे कि वो सारे plants खा गए. Maybe floods आ गए थे, but no one can explain कि भाई cities क्यों हैं. Flood हो गए या river dry up हो गए, हो सकता है rulers का control खत्म हो गया and there was war amongst each other and people started to go out. इसके बाद new cities emerged about 1400 years later. So there was a gap of many decades, many centuries,
एंड आफ्टर 1400 years later फाइनली फिर से हमें सिटीज के एविडेंसेस मिलते हैं. Now I have two questions for you from this part. First question, read it carefully, take 10 seconds to answer. Where is the Harappa site located? As we saw in the map earlier, as I said, it is in Pakistan today. So Punjab in Pakistan is where Harappa site is located. The answer here is B. Second question, which of these is not a characteristic of Harappan civilization? Read it carefully. First, the cities were divided into two parts, which is correct. Usually the western part was smaller but higher, again correct. Third, the wall of raw bricks are not of great quality. This is incorrect. As we discussed in the beginning, these were such amazing quality bricks that they were ready-made and they were used in building of railways. So C is the correct answer because this is not correct.